Guys, welcome again. Myself, MD Tarak Anwar. I am working as an assistant professor in Mechanical Engineering Department at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. Today, I am going to discuss the topic that is deflection and surging phenomenon in compression spring, or you can say helical springs. Already discussed terms used in compression spring in the last video lecture series. So this is lecture number 12 of video lecture series of the subject as a mechanical machine design 2, which comes under the 6 semesters of mechanical as per MDU syllabus. So I am going to discuss here deflection and surging phenomenon in compression spring. See here, deflection of helical springs of circular wire. Already explained किस टाइप का स्प्रिंग होता है, that is circular wire. Clear? So deflection of helical spring of circular wire. Wire में क्या deflection आएगा? In the previous article we have discussed the maximum shear stress developed in the wire. We know that the total active length of the wire is given as L, or denoted by small l, is equal to length of one coil into number of active coils. Length of one coil कितना होगा? पाई इंटू डी. डी क्या है? मेन डायमीटर ऑफ द कॉइल. पाई इंटू डी इंटू एन नंबर ऑफ coils, or you can say active coils. So let theta angular deflection of the wire when acted upon by the torque, that is T. So axial deflection of the spring is nothing but delta is equal to theta into d by 2. क्लियर? क्या होगा? एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस, कितना एक्सियली डिफ्लेक्ट हुआ स्प्रिंग, इट इज गिवन एज डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई 2. यू ऑल्सो नो दैट द फार्मूला और टॉर्जनल फार्मूला, दैट इज टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर. हेयर I have written d upon 2. d upon 2 is nothing but r. T upon j, capital T upon j is equal to tau upon r is equal to g theta upon small l. This is the basic SOM equation which you have studied in the last semester or in the SOM subject. So this is the basic formula. We can apply this formula here. So you can write theta is equal to T एल अपॉन जे जी. कहाँ से आया? मैंने क्या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिया. कंसिडरिंग टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल. इन सम बुक्स इन प्लेस ऑफ जी सी इज ऑल्सो रिटन, that is modulus of rigidity. So where J is the polar moment of inertia of the spring wire, given as pi upon 32 into d raised to 4. This is polar moment of inertia. What is polar moment of inertia? X and Y को ऐड कर दिया. Moment of inertia in x direction and moment of inertia in y direction. After adding we get pi upon 32 into d raised to 4. D being the diameter of spring wire. G is the modulus of rigidity already explained for the material of the spring wire. Now substituting the values of L and J in the above equation we have, क्या कर रहे हैं हम इसमें, इस इक्वेशन को वैल्यू पुट कर रहे हैं L का और J का. L का वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? पाई डी एन ऑलरेडी लिखा है मैंने. तो T का वैल्यू क्या होगा? W इंटू डी बाई 2. टॉर्क कैसे लगेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So I have written W into d by 2 into L pi d n upon J value is pi upon 32 d raised to 4 into G. So after simplification we will get 16 W d square n upon G raised to d G d raised to 4. So substituting value of theta in equation 1 we have delta is equal to क्या था? थीटा इंटू डी बाई 2. सो थीटा वैल्यू क्या है पुट कर देंगे हम यहाँ पे, जो हमको सेकंड इक्वेशन में मिला है 16W डी स्क्वायर एन अपॉन जी डी रेस टू 4 इंटू डी बाई 2. आफ्टर सिंप्लीफाइंग
वी कैन राइट फाइनली ए डब्ल्यू सी क्यूब एन अपॉन जी डी. कहाँ से आया? डी क्यूब अपॉन डी, डी कैपिटल डी क्यूब अपॉन स्मॉल डी क्यूब. क्या है? डी अपॉन डी वैल्यू इज नथिंग बट स्प्रिंग इंडेक्स. क्लियर? mean diameter of the coil and d is the diameter of the wire. I have written here, hence c is equal to d by d. इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? c क्यूब लिख सकते हैं. So I have written here. And the stiffness of the spring or spring rate is given as w upon delta is nothing but k. So after arranging the term, we can write w upon delta is equal to gd raised to 4 upon ld cube into n. Again similar method, using similar method, spring index, so we can write gd upon 8c cube into n. That is the constant value. Now see here another topic, that is eccentric loading of spring. Already explained deflection of the spring. Deflection ko you can find out with the help of above formula already discussed. So here I am going to discuss eccentric loading of spring. What is eccentric loading? Sometimes the load on the spring does not coincide with the axis of the spring. That is, the spring is subjected to an eccentric load. Eccentric load क्या होता है? Along the axis जो load रहेगा वो क्या होगा? Normal load है, but away from the axis, this is known as eccentric load. In such cases, not only the safe load for the spring reduces, the stiffness of the spring is also affected. Correct? In such cases, not only the safe load for the safe load कुछ होगा spring के लिए, कब होगा? जब वो centrally act करेगा. But इस केस में क्या होगा? eccentric load is acting. So not only the safe load for the spring reduces, the stiffness of the spring is also affected. The eccentric load on the spring increases the stress on one side of the spring and decreases on the other side. क्यों होगा? क्योंकि बेंडिंग फिनोमेनन अकरिंग. बेंडिंग होगा क्योंकि क्या हो रहा है? कंसीडर ए बार, लोड इज एक्टिंग एक्सियली ऑन दिस बार, तो क्या होगा? एक्सिस से पार करेगा. बट अवे फ्रॉम द एक्सिस दिस लोड इज एक्टिंग सम डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द longitudinal axis of the member. So due to this load there will be a bending. तो क्या होगा? एक वायर क्या होगा? और यू कैन से बार में क्या होगा? एक साइड में ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, एक साइड में कम आएगा, ड्यू टू eccentric axial loading. So eccentric axial load on the spring increases the stress on one side of the spring and decreases on the other side. When the load is offset by a distance e, considering eccentricity कितना है? E from the spring axis, then the safe load on the spring may be obtained by multiplying the axial load by the factor, that is d upon 2e plus d, where d is the main diameter of the spring. जब इस टाइप का केस रहेगा तो हम क्या करेंगे? एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज गिवन एज डी अपॉन 2e प्लस डी, वेयर डी इज द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग. नाउ we'll discuss very important concept, that is surge in the spring, or you can say surge in the compression spring or helical spring. From definition it will be clear, so no need to worry. Read the definition and understand the concept, what is surging phenomenon in spring. When one end of a helical spring is resting on a rigid support, correct, rigid support पे फिक्स्ड किया, and the other end is loaded suddenly, ऊपर में क्या लोड लग रहा है, अचानक से लोड आ रहा है, then all the coils of the spring will not suddenly deflect equally. एक ही बार में पूरा जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा. अपर पोर्शन में क्या होगा? बिकॉज सम टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ ए स्ट्रेस अलॉन्ग द स्प्रिंग वायर. ऊपर में पहले लगेगा, फिर वो नीचे से क्या होगा? वेव के फॉर्म में नीचे की तरफ मूव करेगा. अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट इन द बिगिनिंग द एंड कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग इन कॉन्टैक्ट विद द अप्लाइड लोड टेक्स अप ए होल ऑफ द डिफ्लेक्शन. क्या होगा? इनिशियली जैसे ही लोड लगेगा तो ऊपर वाला जो कॉइल है उस पर क्या होगा? पूरा लोड आ जाएगा. क्लियर? करेक्ट. अचानक जब लोड लगा स्प्रिंग वायर पे तो क्या होगा? पूरा का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो जाएगा, प्रोपेगेट तो नहीं हो जाएगा ऊपर से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक. इनिशियली क्या होगा?
A little consideration will show that, थोड़ा सा कंसिडर करो, imagination power, increase your imagination power. A little consideration will show that in the beginning the end coil of the spring in contact with the applied load takes up the whole of the deflection, and then it transmits a large part of its deflection to the adjacent coil. क्या होगा? Similarly, जैसे वाटर फ्लो करा रहे हैं तो क्या होगा, अचानक से वाटर क्या टिप पे नहीं पहुंच जाएगा, स्लो 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 मूव करेगा. उसी तरह वेव के फॉर्म में क्या होगा, पहले अपर कोयल, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला. सिमिलरली इन दिस वे the wave of compression propagates through the coils to the supported end from where it is reflected back to the deflected end. पहले क्या होगा, ये पहुंचेगा नीचे तक, फिर नीचे से क्या होगा, इसको वापस ऊपर ढकेलेगा. ये एक्शन रिएक्शन फिनोमेनन. In this way, a wave of compression propagates through the coils to the supported end from where it is reflected back to the deflected end, जो डिफ्लेक्ट हुआ था. The wave of compression travels along the spring indefinitely. क्या होगा, एक ट्रैवल करते रहेगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. The wave of compression travels along the spring indefinitely. If the applied load is of fluctuating type, as in the case of valve spring in internal combustion engine, इसमें क्या होता है, बार बार स्प्रिंग पे क्या लग रहा है, बार बार खुल रहा है, बार बार बंद हो रहा है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व स्प्रिंग. इसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ क्या हो रहा है, रेगुलर और कंटिन्यूअस वर्किंग कर रहा है. फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ लोड इज एक्टिंग ऑन दिस स्प्रिंग. And if the time interval between the load applications is equal to the time required for the wave to travel from one end to other end, then resonance will occur. Clear? What is the resonance? You know that. You have studied in 12th and engineering also. What is the resonance? You can refer. Resonance क्या है, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा. Clear? So the time interval between the load, जिस टाइम से टाइम इंटरवल लोड का है, उसी तरह क्या हो रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू वेव टू ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, देन रेजोनेंस विल अकर. दिस रिजल्ट्स इन वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल्स एंड correspondingly very high stresses. Under these conditions it is just possible that the spring may fail. बहुत ज़्यादा चांस है, most of the chances of spring failure. This phenomenon is called surge. I hope you understood the concept. What is surging? क्या हो रहा है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ वेव ट्रैवल कर रहा है जब हमने लोड उस पर अप्लाई किया. अब क्या अगर नीचे पे पहुंचेगा, नीचे से पहुंच के क्या है, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो स्प्रिंग वायर के अंदर क्या वेव जनरेट हुआ. जब दो फ्रिक्वेंसी, लोड का फ्रिक्वेंसी और वेव का फ्रिक्वेंसी क्या होगा, जब मैच कर जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा. रेजोनेंस के क्या है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफ स्प्रिंग फेलियर, बहुत ज़्यादा चांस है कि स्प्रिंग विल फेल. It has been found that the natural frequency of spring should be at least 20 times the frequency of application of a periodic load in order to avoid resonance with all harmonic frequencies up to 20th order. The natural frequency for spring clamped between two plates is given by the formula. I'll explain. So read this definition. क्या होगा, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को क्या है, हम 20 टाइम्स मोर रखेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग, सो दैट स्प्रिंग विल नॉट फेल. So given the formula that is given as natural frequency is d upon 2 pi capital D square into n under root 6g capital G into small g upon rho cycles per second. This is the frequency or natural frequency. So where I'll explain each and every term. That is where d is the diameter of the wire, इसका spring wire. Capital D is mean diameter of the spring, n number of active turns, and G modulus of rigidity already explained. Sometimes in books in place of G C is written, so don't be confused. So G is the modulus of rigidity, G is the acceleration due to gravity, rho is the density of the material of the spring. Surge in spring may be eliminated by using the following method. First one is by using friction dampers on the center coil so that the wave propagation dies out. क्या मतलब, हम क्या एक डैम्पर लगा देंगे, डैम्प लगाएं, जैसे लोड आया तो उसको डैम्प कर दिया, ऊपर की तरफ वो मूव नहीं किया, वेव प्रोपेगेट नहीं किया ऊपर नीचे,
तो क्या होगा, बाय यूजिंग फ्रिक्शन डैम्पर्स ऑन द सेंटर कॉइल सो दैट द वेव प्रोपेगेशन, कभी कभी देखे होगा, यू हैव सीन इन द बाइक टू स्प्रिंग और कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग लगा रहता है, सो दैट क्या होगा, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग की वजह से. और you can use lubricant or high lubricants, or you can dip spring in the lubricant container. क्या होगा, तो lubricant क्या होगा, कुछ शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा. क्लियर. बाय यूजिंग, सेकंड पॉइंट इज बाय यूजिंग स्प्रिंग ऑफ हाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी. दूसरा मेथड क्या है, हाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी का हम बनाएंगे स्प्रिंग. बाय यूजिंग स्प्रिंग्स हैविंग पिच ऑफ द कॉइल्स नियर द एंड्स डिफरेंट दैन एट द सेंटर टू हैव डिफरेंट नेचुरल फ्रिक्वेंसी. सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है, सेकंड में क्या किया मैंने, नेचुरल फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा बना दिया. थर्ड में क्या बोल रहे हैं, बाय यूजिंग स्प्रिंग हैविंग पिच ऑफ द कॉइल. पिच जो है सेम नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, एंड पे डिफरेंट होगा, सेंटर पे डिफरेंट होगा, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो अलग अलग होगी. क्लियर. सो बाय दिस मेथड यू कैन eliminate surging in spring. Now we will discuss energy stored in helical spring of circular wire. We know that the springs are used for storing energy which is equal to the work done on it by some external load. Clear? क्या मतलब, स्प्रिंग को क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. स्टोरिंग एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर करता है, जितना इस पर वर्क डन हुआ. वर्क डन कहाँ से होगा, एक्सटर्नल वर्क और एक्सटर्नल लोड. लेट W इज़ द लोड अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग एंड डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग ड्यू टू द लोड W. You know that the formula of energy or energy stored is given as, assuming that the load is applied gradually, the energy stored in spring is given as U is equal to, U is nothing but energy stored is equal to half W into delta, or half P delta. In place of W you can write P. So no need to worry, this is the energy storing formula. You can apply this formula or find out various relation by this formula. In GATE exam generally stored energy formula in objective questions are asked. So we have already discussed that the maximum shear stress induced in the spring wire in the last video lecture series, that is given as tau is equal to K into 8WD upon pi d cube, or W is equal to, after arranging the term, tau into d cube in you can पहले भी पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, नो. सो आई हैव tau into pi d cube upon 8kd. Here I have pi d cube into tau, so nothing is different. We also know that the deflection of the spring is given as delta is equal to 8WD cube into small n upon g d raised to 4. Clear? So putting the value will get as half into W into delta. So putting the value or arranging the term, you can write here it finally pi tau d square into n upon k dg. Clear? So substituting the value of W and delta in equation 1, that is U is equal to half W into delta. So putting the value of delta and W in this equation, half W into delta, finally we will get as tau square upon 4k square g pi d n in the bracket and pi upon 4 into d square in the bracket. I have taken common this term or separating this out because you have to change this value in volume. Pi upon 4 d square is nothing but area, pi d n nothing but length. So length into area, it will give you volume. So I have written here tau square upon 4k square into g up into volume, where V is the volume of the spring wire, L in the length of the wire, and into cross sectional area of the spring wire. Clear? Already explained, but here he has written. So I am reading this point, length of the wire into cross sectional area of the wire, that is nothing but pi d n into pi by 4 d square. So when a load say P
falls on a spring through a height h, then the energy absorbed in a spring is given by V is equal to P into H plus delta is equal to half W into delta, where W is equivalent static load, that is the gradually applied load, which shall produce the same effect as by the falling load P, and delta is the deflection produced in the spring. So this is the topic I already discussed. Now we will discuss another topic, that is helical spring subjected to fatigue loading. ऊपर में क्या हुआ था, energy stored in the spring. So by using all formula you can find out different types of data in case of spring problems. So you have to remember these formula so that you can calculate spring problems easily. Now we will discussing here helical spring subjected to fatigue loading. The helical springs subjected to fatigue loading are designed by using the Soderberg line method, already explained in the first unit, very first unit, Soderberg and Goodman criteria. You can refer this video for explanation. The spring materials are usually tested for torsional endurance strength under a repeated stress that varies from 0 to a maximum. Since the springs are ordinarily loaded in one direction only, the load in spring is never reversed in nature. ये नहीं कि कंप्रेशन है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर रहे हैं, कंप्रेशन को टेंशन को कंप्रेशन में चेंज नहीं कर रहे हैं. Therefore, a modified Soderberg diagram is used for spring as shown in figure. Given in the figure, that is next page. On the next page, I'll explain this figure. Wait for that. The endurance limit for reverse loading is shown at point A, where the mean shear stress is equal to tau E or equivalent shear stress upon 2, and the variable shear stress is also equal to tau E upon 2. A line drawn from A to B, the yield point in shear, that is tau Y, that is Y in the suffix, gives the Soderberg's failure stress line. If a suitable factor of safety, that is Fs, is applied to the yield strength, that is tau Y, safe stress line CD may be drawn parallel to the line AB. Soderberg line क्या होता है, inclined होता है, straight line होता है, as shown in figure below. Consider a design point P. मैंने एक point consider किया है, design point on the line CD. Now the value of factor of safety may be obtained as discussed below. So see the figure here, it will be clear to you. This is Soderberg line. First line is on the very right side, failure stress line. Clear? I have drawn here safe stress line parallel to the Soderberg line. So I have given a name here A, B, D, C, D, O, P, Q, R. Clear? So also I have mentioned here the value of O2A, tau E upon 2. Similarly, O1 to O, tau E upon 2. So see the values here. I have taken a pause so that you can read this diagram easily. tau E upon 2 कहाँ से कहाँ तक है, tau M मीन शेयर स्ट्रेस कहाँ से कहाँ तक है, tau Y upon ऑफिस कहाँ से कहाँ तक है, O1 to D, ठीक है, O1 to O, O1 to Q. Clear? And last one is tau Y, that is O1 to B. Similarly, from baseline or x axis or y axis, x axis is representing mean stress and y axis is representing variable stress. Clear? So I have taken a point P, it is design points. So इसका distance कितना है, variable stress का value जैसे tau v. Clear? So this is the modified Soderberg method for helical spring. From similar triangle, that is, see the triangle here, PQD, कहाँ से कहाँ तक, PQD, यहाँ पे थीटा शो कर रहे हैं. दो ट्रायंगल है, एक ABO और एक CDO और एक PDQ. तो here I am considering, because
We want simplified form to solve the equation or derive the equation. So from similar triangle, that is यहाँ पे कौन कौन कंसिडर करेंगे, टू ट्राइंगल्स पी क्यू डी एंड ए ओ बी लार्जर ट्राइंगल. So you can write PQ upon QD is equal to OA upon OB or PQ upon O1D minus O1Q, nothing but QD. Similarly, OA upon O1B minus O1O, nothing but OB. Clear? So putting the value in this equation, that is PQ value is tau V, tau y upon Fs minus tau m. So I will not explain each and every term. You can refer this diagram and you can put the value from this diagram to this equation easily. So I'll explaining again, that is after simplifying or arranging the term, you will get tau e into tau y upon Fs, this point. Hence, therefore tau e into tau y upon Fs is equal to tau v into tau y minus tau v into tau e plus tau m into tau e. So dividing both sides by equivalent shear stress and yield shear stress and rearranging, we have 1 upon Fs is equal to mean shear stress minus variable shear stress upon yield shear stress plus 2 tau v, that is variable shear stress upon equivalent shear stress tau e. So finally you will get this equation as from equation 1, the expression for the factor of safety. ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था, इसको क्या किया मैंने, अरेंज कर दिया लास्ट पेज में. क्या होगा, वी विल गेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज शेयर स्ट्रेस और यील्ड शेयर स्ट्रेस अपॉन मीन शेयर स्ट्रेस माइनस वेरिएबल शेयर स्ट्रेस प्लस 2 tau वेरिएबल शेयर स्ट्रेस और यील्ड शेयर स्ट्रेस अपॉन इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस. This is the formula for finding out factor of safety. Using this relation, if given in the question, you can easily find out factor of safety in case of spring, if all values are known. The value of mean shear stress, this is tau m, is calculated by using the shear stress factor Ks. Terms used in helical spring already explained, and formula. So you have to remember, or you can refer that video lecture series. So Ks, while the variable shear stress is calculated by using the full value of the wall stress factor, thus mean shear stress is given as tau mean is equal to Ks into 8Wm into capital D upon pi d cube, where Ks value is given as 1 plus 1 upon 2c and Wm or mean load given by W max plus W minimum upon 2. This is given as mean load. So यहाँ से क्या करेंगे, हम केस का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, WM मीन लोड का वैल्यू फाइंड करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग आउट वैल्यूज यू कैन पुट in the equation of mean shear stress, that is tau mean is equal to Ks Wm into D upon pi d cube. Similarly, and variable stress is given by tau V into K into 8W V into capital D upon pi d cube, where the value of K is 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 upon C. यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम द वॉल स्ट्रेस फैक्टर. ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, ऊपर वाले फार्मूला में, दैट इज टाउ वी. एंड डब्ल्यू वी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू मिनिमम अपॉन 2. तो क्या होगा, ये वेरिएबल लोड हमको पता चल जाएगा. तो आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस वैल्यूज and putting these values in the above equation, that is mean torque or variable shear stress or mean shear stress, you can easily find out the values using these relations. So today I am finishing my topic here. Thank you guys.